काय गरम झालाय शी बेकार बेकार बेकार. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Uh, okay. There is only last few
around 10 to 20 slides of Unit 5 remaining. They will be done in a day. And there is one experiment 5 remaining. I was expecting the attendance to be more so that I can start with experiment 5. But assuming that this attendance would stay, we'll we'll finish Unit 5. Okay. If there is time, which I'm hoping, I will show you one scenario of the experiment 5. And tomorrow we'll complete with the last experiment. So tomorrow's lecture is going to be the last lecture. So I suggest that you attend it. If you have any last minute doubts, queries, we can discuss. Okay. If there is something else that you want me to check with, I can do that. So tomorrow will be a more of a concluding lecture. Okay. So I'll plan to finish it today, but if it does not, a little bit tomorrow, and the little bit is mostly going to be the experiment 5. Okay, so there are two scenarios kind of or ways of doing it. So I'll try to show one today and one tomorrow. Okay, so let's start. Let me share my screen. Richa. Okay. Shrecha, you have mailed me a technical seminar. So an approval is expected from me, right? Yes, sir. Okay. And okay, I'm just asking because even Ashay messaged me. So I am not sure if one person is to be there for two or anything. But anyway, I'll see you today and give you the approval. That's it, right? Nothing else other than approval. No, sir. Okay, thank you. Okay. So one more doubt. This technical seminar, you're going to represent it somewhere? So in offline mode Okay. So on Monday. on Monday in college. Yes, sir. So are there going to be external, what do you say, teachers guides or just the MIT faculty? So only guide. Only guide. Yes. Okay. Only MIT faculty, sir. So this is just only a technical seminar review too. The final practical will be on 17 or 18. Okay. Okay. So there is internal guide. I am the external, and then this is a review to final will be on 17, right? Yeah. Okay. I'll give it to you today only. If for some reason you don't hear from me by today evening, just send me a message as a reminder. Okay. Okay, sir. Okay. So unit 5, just around 10 slides remaining. Okay. So we had gone through servers handling multiple, what do you say, services. You remember the client server model. It is also an example of UDP. Echo server is the same thing. Why it's the same thing? Because the server is echoing back the messages that you are sending it. Okay. The example that we saw was directly the one that was handling multiple clients. Okay. Again, go through the recordings. If there is something missing, please do let me know it tomorrow. Okay. I showed you where I open multiple terminals to represent multiple clients, and those clients are sending requests. Then there was one where the client was within one terminal and it was just one after the other that the request was sending. Okay. Let me see if in whiteboard I have it. Okay. This was the last lecture, and this scenario. Uh,
Yeah, where multiple threads, as in multiple terminals, showing multiple clients sending requests, and there was just one terminal in this situation over here, where multiple requests were sent by from one terminal. Okay, so both scenarios are possible, or you can do it. Okay, next, obtaining and setting a host name. These are very rudimentary or basic tasks, the important during networking or other monitoring. Okay, so this is for 7, 8, and some additions of 10. So these are the steps. You open computer properties, you click change settings, then you go under computer name, domain, and workgroup settings. You change button under computer tab name. You set a host name for your systems and click OK. This will require system reboot. Reboot systems immediately or use option 2 latest. All done, as in everything is done. So in 11, it is very easy that way. Okay, so if I go over here, if I go to computers and then click on properties, okay, you see rename this PC. It is that easy. Okay, if you have anything else, you follow these steps. Now this is important because when in a cloud environment or in a company setup, to identify a certain device is very important. Okay, so if there is an unknown entity, it is remembered by the host name. There is a format to how a host name is set up. Okay, so for example, there is another way of finding. You go to command prompt and you type host name. So this is my host name. Okay, so there is a format to how it is set up, which is important in network administration, configurations, security. Okay, this is the name is important in all of this. So if I change the name right now, suddenly my device becomes unknown to the network. If it becomes unknown to the network, there are certain policies, security policies that might not get applied. Okay, there is certain security problems that it might trigger. It might be vulnerable to something else. Network administrators won't be able to identify me. If there is certain messages that need to be sent to me, there will be a problem, or I will not be able to send a message. Okay, so single individual isolated machine, like in your home, it doesn't matter much. You can change it anytime, anyhow. But when you are in a network, in a company, or in a private setup, it is very important. Okay, that that slide or topic is not included, where the functionality or importance of that host name is I have included, but it is for your own self study. Okay, find out why setting a host name is important, or how it is to be set. Okay, what problems it can cause, and so on. Okay, this was for Windows. This is for Linux. So Linux, it is pretty easy. Host name, and you just type the new host name. This will change the host name for your system immediately. But there is one problem, that is the original host name will be restored upon next reboot. Okay, for permanent change, it will need some changes in the configuration files. Okay, again, this for permanent changes, what configuration needs to be changed, what configuration files need to be changed, it is self-study. It is self-study because it is not that you will come across it frequently. It is not that you'll use it every day or you need to remember it. A simple Google search will tell you what you need to do. That is why it is in self-study, and I have not included in this PPT. Okay. In newer versions of different Linux distributions, such as latest Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Red Hat, etc., these are all flavors of Linux. Okay, so Linux is a platform, OS platform, and different platforms are there. So it is basically like Windows 7, Windows 8, 10. Okay, it's just that different names are given for those different flavors of Linux or different OS types. Okay, comes with system D, a system and service manager that provides a host name CTL command to manage host names in Linux. So if you want to change
in the newer versions of Linux, it is sudo hostname ctl set hostname and the new hostname that you want to put. Okay. Again, I cannot give you a demo because this machine is connected to the company network and change. First of all, I don't have the access. If I need the access, I will have to run it as an administrator. As soon as I do that, it will raise a security alert. That's why I'm not doing it. I am just showing you the theory and you can do it on your own. Okay. Next, network byte order and conversion routines. So unfortunately, not all computers stores the bytes that comprise a multi-byte value in the same order. There are two ways to store this value. Okay, what a byte is what? What is a byte, or how much is the size of the byte? How many bits is one byte? Let's rephrase the question. Nobody? Sir, 8 bits. 8 bits. Nice, nice. Yes, thank you. These small informations are also important. Okay, so good. Let me find a new one. Okay, so the reason network byte order, network byte order, it's nothing but how a computer stores or maintains the values or how he sees it. Okay, ये जो भी values, so 1 0 1 0 0 0 0 whatever, it goes to what decimal that we see. Okay, what we see 89, 10, whatever decimal values are there, and it is basically how the computer sees it or stores it. Okay, so there are all computers are bound to it, by the way. Now there are two schemes. One is little endian and one is big endian. So in little endian, low order byte is stored on the starting address A and the higher order byte is stored on the next address A plus 1. In big endian scheme, higher order byte is stored on the starting address A and the low order byte is stored on the next address A plus 1. Okay. So what I mean by that is, let's say there is a number 1, 2, 3, 4. In the little endian system, let's say my laptop is little endian. Okay, it uses this format. So in that format, 1, 2, 3, 4 number is stored how? Where did that go? Okay. Lower order byte is stored on the starting address. Okay. So let's say this is A, this is B, C, D, E, F, and so on. So lower order as in it will store 12 over here. Sorry, it will store okay. So lower or least significant bit is stored first, then least significant bit plus 1, and this goes on till most significant bit. Okay, so in this is the original number. For example, if this is the original number, 1 2 is the starting point, right? But in LSB, lowest significant bit, so 3 4 is the lowest significant bit, that will be stored first and then 1 2 will be stored. Okay, exact opposite happens in big endian format. So basically the original number will be stored as it is. So A, B, C, D, E, F. Okay. So here most significant bit
comes to the right. Least significant bit is to the left. So +1 plus as in least significant bit +1, and it goes on towards the right in order to form the most significant bit. Now, what is the most significant bit? It is 1, 2. Next is 3, 4. So that is how it is stored. Here in Little Indian, it is stored as 1, 2, 3, 4. Here it is stored as 3, 4, 1, 2. Okay. And while showing, okay, how is memory going to be read? Memory reading is going to be done like A, B, C, D, E, F as it is. So in Little Indian, the number becomes 3, 4, 1, 2, which is wrong. Why? Because our original number is 1, 2, 3, 4. Okay, so this is in Little Indian. In Big Indian, what happens? Most significant bit, as in A, is taken first, which is 12. Then it is B, which is 34, which is the correct format. And Big Indian format is the, like right now, modern times, it is the default one, and everything, every system is in Big Indian format. Very less number of systems are still in the Little Indian format. Okay, so to allow machines with different byte order conventions, what are the byte order conventions? These Little Indian and Big Indian are a byte order convention. Communicate with each other, the internet protocols specify a canonical byte order convention for data transmitted over the network. This is known as network byte order. Basically, what all systems in the world have agreed, okay, using internet protocols, that the system that we will use is Big Indian, where most significant bit will be first, and then towards the left will be least significant bits. So the conversion of Little Indian to Big Indian, or from other system to an agreed upon system, is network byte order. Network byte order is also Big Indian. Why? Because that is the agreed upon format. So Big Indian, also known as or is equal to network byte order. इसका मतलब तुम्हारे नेटवर्क में जब तुम डेटा भेजोगे वो कौन से फॉर्मेट में जाएगा? नेटवर्क बाइट ऑर्डर में जाएगा. मतलब जब ये ऐसा स्ट्रीम जाएगा डेटा का, ठीक है, तो कैसे जाएगा? ए पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे. In this format it will go where A has most significant bit and D has least significant bit. So जब यहाँ से यहाँ में मैसेज जाएगा, okay, he will get the original which is 1 2 3 4 number and not उल्टा वाला 3 4 1 2. ठीक है? While establishing an internet socket connection, you must make sure that the data in the SYN port and SYN address members of socket address structure are represented in network byte order. This is in C language. Okay, so let's see an example. ठीक है, it will differ in Python. You don't need it because वो automatically करता है. C थोड़ा पुराना है, इसीलिए इसमें ये सब structure है और conversion करना पड़ता है. अगर लैंग्वेज नहीं हुई like Python, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो automatically converted to bigger ये. See this one, structure, address in, family. Okay, it is all written over here. इसमें ये देखो, this one. So port number, network byte order, it is in Big Indian or conversions are required. Okay, so on Google you just search it and you'll get how the functions are written or how they are supposed to be used. Okay, these are another types. So these are conversion functions. Okay, host to network short, host to network long, network to host short, network to host
लॉन्ग, ठीक है. सो नेटवर्क एज इन नेटवर्क में क्या यूज हो रहा है और वो होस्ट फॉर्मेट में चेंज करने के लिए करना है, ठीक है. सो नेटवर्क टू होस्ट लॉन्ग, होस्ट एज इन मेरा मशीन टू नेटवर्क, मैं जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हूं उसका फॉर्मेट क्या है, तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए विच इज बिग इंडियन होस्ट टू नेटवर्क शॉर्ट और होस्ट टू नेटवर्क लॉन्ग. अगेन फंक्शंस जस्ट एक सिंपल गूगल सर्च करोगे तो हो जाएगा. लेट्स सी दिस वन. ठीक है, you get the syntax, parameters, return values, everything. ठीक है, let me find a better. ठीक है, इसमें देखते हैं. Okay, see, he has also given you a description of what it is used, how it is used. ठीक है, okay, this is in C++. Again, if you don't use, you don't have to go through the functions. Python mein it happens automatically. Let me see if this comes in socket, which it should come, by the way. So okay, let's go to the socket library. Yep, see, socket dot this convert 16-bit positive integers from network to host byte order. ठीक है, so network to host byte order as in from big Indian to little Indian. On machines where the host byte order is same as the network byte order, there is no operation. ठीक है, now this is used in case automatically नहीं होता, otherwise it is done automatically. ठीक है, then these functions are macros and result in the insertion of conversion of source code into the calling program. Little Indian machines, this code will change the values around to network byte order. On big Indian machines, no code is inserted since none is needed. The functions are defined as null. Why? उससे पहले, did you understand this? Did you understand this system or what happens? Yes, sir. Okay, one. Others. ठीक है, if you guys have understood, then tell me why. On big Indian machines, no code is inserted since none is needed, and why is that? Sir, because it is once we don't have to rearrange the thing. That is means it already is in the order, so we don't have to do the code. Yes, Right? that's correct. That's right. In big Indian machine means network order pipe. It is an agreed upon system. और अगर machine already उस system में है तो conversion की जरूरत नहीं है. Hence, the functions are defined as null. That's good, very good, Prathamesh. Okay. IP address manipulation routines. ठीक है, तो इसमें एक library है IP address. This is how you install it. ठीक है, again, this is, I have chosen time and time Python because it's easier for me to understand.
अगर आपके लिए कुछ और लैंग्वेज हो तो प्लीज गो अहेड एंड यूज इट. यू विल generally find this IP address library in all, ठीक है, because this is, I mean, irrespective of language, it works because this works on the network level. The IPv4 address objects have a lot of attributes for IPv4 address. IPv4.IPv4 address, and if you give him the IP, that is how the function will work. Okay, so it is a construct, an IPv4 address object representing address. Some attributes of the class are as follows. एक मिनट. ठीक है. Nothing. I was just going over through my notes. Okay. So these are some of the functions. Okay. Is multicast return true if the address is reserved for multicast use? Is private return true if it is private? अगर global है तो if it is true, return that it is global. What global? IP, I mean. ठीक है. So ये जो IP address यहाँ पे there should be an IP. So IP multicast है तो yes, private है, global है, unspecified है, reserved, loop, backlink, local. Excuse me. So there are many functions to identify what an IP address is or could be, और उसकी क्या value return होनी चाहिए. Now why is this important? Because तुम तो identify कर सकते हो, but how is a machine going to identify? ठीक है. How is a function going to identify? For a function to identify, for a software application to identify, it needs this kind of functions. Okay. So for example, जब कोई coding करेगा और उसे ये दिखाना, and he is coding, let's say, a firewall, ठीक है, वो बना रहा है नया अपना खुद का firewall बना रहा है, तो he needs his program, his application needs to know कि वो जो IP आ रहा है, जिससे कनेक्शन आ रहा है, वो प्राइवेट है कि पब्लिक है. तो वो कैसे बताएगा मशीन को? उसके लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेगा, उस लाइब्रेरी में जो फंक्शन है उसे यूज करेगा. तो वो क्या करेगा, जो इनकमिंग कनेक्शन है उसका जो IP एड्रेस है, इज इट प्राइवेट, ठीक है, ये फंक्शन यूज करेगा. सो व्हाट ही विल डू, IP address dot IPv4 address is private डालेगा of the IP. अगर ट्रू हुआ तो allow the connection, public हुआ तो don't allow, और vice versa, whatever the functionality is. ठीक है. So this is how these IP address manipulation work. ठीक है. Again, for this also you can just Google. ठीक है. तुमको अगर ये करना है तो to see how it works, functionalities, just Google. See, here it is. So IP address dot IP address, और तुमने IP डाला तो it is IPv4, वो IPv6 तुम्हें दे देगा. उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ और manipulations करनी है, कुछ identify करना है, so this is how you do. So it is multicast private, for example. Address dot is private is equal to mapped. ठीक है. Global, everything is defined here. All you have to do is क्या कहते हैं, use it in the functions. EA, for example, format of this, change the format. I converted the IP address to binary. ठीक है. There is a lot to go. Compare, exclude या फिर ये. ठीक है. So इसमें like compute the network definitions resulting from removing the given network from this one. तो अगर नेटवर्क में से कोई particular IP exclude करना हो, include करना हो, तो you can do it via these functions. ठीक है. There are a lot of functions, so if you want to go through it, you can. ठीक है. और if you have a problem of कोई फंक्शन वर्क नहीं हो रहा है, तो पाइथन के फोरम्स होते हैं, कम्युनिटी डिस्कशंस होती हैं, वहां पे यू कैन
ask your question or type it out, और see अगर किसी ने पहले से किया है तो, ठीक है? See this one over here. Same thing, जिसकी functionalities है, ठीक है? So you do IP address library, उसके अंदर का function and you give him the IP address. This is very basic level. वो जो मैंने documentation दिया उसमें थोड़ा ऊपर का है, and this can go even deeper or further. ठीक है? So these like examples of where this could be used more is in network security. ठीक है? जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सिर्फ पब्लिक अलाउ करो या प्राइवेट अलाउ करो. दूसरा इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है? सो अगर as an internet service provider you filter out multicast addresses, ठीक है, because customer traffic for efficient use of network resources. ठीक है? तो multicast किसके लिए यूज होता है? टू मल्टीकास्ट थिंग्स लाइक रेडियो, स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स वाला जो चीज है, एंड वो फिल्टर आउट करना पड़ेगा बिकॉज द कनेक्शंस ऑफ वन टू वन चैटिंग या फिर कॉलिंग आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू मल्टीकास्ट एड्रेसेस. सो इफ यू फिल्टर आउट इज मल्टीकास्ट, जो ये वाला था, ठीक है, सो इज मल्टीकास्ट, यू आइडेंटिफाई एन आईपी एड्रेस and then you use the exclude वाला जो मैंने अभी तुमको इसमें दिखाया in this documentation, right? Exclude. So you find out कौन से multicast है, you exclude them, और जो बचे कुछ हैं you use it for normal connection, और जो दूसरे multicast है you use for streaming media या फिर radio, whatever your purpose is. ठीक है? मल्टीकास्ट वाले जिसमें मतलब तुमको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना हो, ठीक है, वो वाले. सो यू टुक आईपी एड्रेस, यू फिल्टर्ड इट आउट, आपने उसके ग्रुप्स बनाए एंड यू यूज्ड इट अकॉर्डिंगली. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन आप जब कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो या फिर आप कोई अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तब मैन्युअली जब आप देख रहे हो एज एन इन्वेस्टिगेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जनरली यू डोंट नीड इट, क्योंकि आप मैन्युअली करते हो, आप देख के करते हो. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका मशीन इसको समझे, आपका सॉफ्टवेयर इसको समझे, तो देन दिस लाइब्रेरी एंड दिस फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? अनदर एग्जांपल इज वेब होस्टिंग. सो इफ यू आर रनिंग अ वेब सर्विस, you can use is global after to verify that IP address assigned to your services are public and accessible from the internet. ठीक है? So तुम्हारा वेब सर्वर हुआ, आपका खुद का वेब सर्वर है जिसपे आप आपकी वेबसाइट ये करते हो, तो यू और आपके पास एक पूल ऑफ आईपीज है, राइट? सो यू यूज इज ग्लोबल टू आइडेंटिफाई कि IP1, IP2, IP3 ये जो भी है, इसमें से ग्लोबल कौन से हैं. अगर 2 और 4 ग्लोबल है तो आप ये यूज करेंगे एंड यू विल गिव योर वेबसाइट टू द वर्ल्ड, राइट? बिकॉज दीज आर नॉट ग्लोबल. एंड अगर कोई इस पे आता है, अगर कोई www.example.com पे आता है एंड अगर आपकी वेबसाइट IP1 या IP3 को है, it will not work. Why? Because those IPs are not global. Okay, that is why you need to use this functionality to check कि आपका किस में है और किस में नहीं है. Okay, that's pretty simple. एक एग्जांपल दे रहा हूं तुमको. सो पोर्ट 8080, ठीक है, ये पोर्ट तो सबको मालूम है, ठीक है. हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ओके, इसमें OX is a prefix telling कि ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल में है. I hope you all remember what hexadecimal numbers are. ठीक है? Most common example of hexadecimals is memory locations. ठीक है? So सारी memory locations generally are in मतलब
every memory location is hexadecimal format starting with OX, identifying कि ये एक memory location है, ठीक है? So this is what I'm saying, representation of port 8080, ठीक है, in hexadecimal format 1F90. So tell me, how will this number be represented in Little Indian format and how will it be represented in Big Indian format? Sir, in Little Indian format, it will be 901F, and in Big Indian format, it will be 1F90. Yes, that's correct. Thank you, Prathamesh. I don't इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि I don't understand, सिर्फ तुमको समझ रहा है, बाकियों को नहीं, कि बाकी है भी कि नहीं क्लास में. Anyway, next, obtaining information about hosts. Again, there is the difference between manually doing it and doing it via code. The example I just showed. ठीक है, कि तुम as an administrator, an analyst वगैरह, you can do it directly through GUI or through commands. लेकिन अगर किसी मशीन को अंडरस्टैंड करना है या फिर किसी सॉफ्टवेयर में आपको डालना है, किसी एप्लीकेशन में डालना है, so you need to be able to code it this way in order to identify the information. ठीक है, so I am doing nothing here. I'm just importing a library and I'm going to give a host name जिसकी मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, एंड इसको अपन चेंज करते हैं फॉर chess.com, ठीक है, एंड देन आई एम ट्राइंग टू कैच एनी एरर्स, ठीक है. सो व्हाट इज द ट्राइंग, दैट IP address is equal to socket.get by hostname. hostname मतलब हमारा यहाँ पे जो डालेंगे, I will get the IP address from it. This is a very basic example where I'm trying to get the IP address of the host or the server. आप इसमें manipulation करके और इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है. Whatever your program और application needs to do, उस हिसाब से आप किसी होस्ट की, किसी सर्वर की, किसी पीसी की इंफॉर्मेशन you can get it. Of course it is subjected to कौन सी अवेलेबल है, पब्लिकली नोन है या आपको एक्सेस है कि नहीं, बट दिस इज द बेसिक दैट यू कैन डू, ठीक है. सो Python, copy paste, oh shit, sorry, this won't work. Oh, there is an example.com, ठीक है, that's the cached क्या कहते हैं, information, so probably wrong, ठीक है. यहाँ पे the IP address of www.chess.com is 104.18.137 and .67. Let's see if it is correct. So you go to command prompt and you do ns lookup www.chess.com. Here it is 137.67. So yes, it is correct. So basically chess.com के 5 IP addresses हैं और you can say 5 load balancers हैं जिसके पीछे servers हैं और हमें आ रहा है उसमें से 104.18.137.67 से, ठीक है. Got information about the host. How it looks like is this way, ठीक है. So here there is load balancer, sorry, let me ठीक है. There are load balancer 1, load balancer 2, sorry, load balancer 3,
load balancer 4. ठीक है? I hope you remember what load balancers do. In load, okay, and as you see, there are multiple IPs. Okay, so 104.18.141.67. ठीक है? This is 137.67. This one is 138.67. This one is 139.67. ठीक है? And in load balancers के पीछे there are servers which give you what? Which give you the website. ठीक है? इनके पीछे servers है. They hold the chess games, players, all that information and जो भी आती है. So when I executed that command, what happened is my request came from the internet. ठीक है? It went to क्या कहते हैं, routers and all, and then it came to the network. It came to this network of chess.com. ठीक है? जैसे ही उनके नेटवर्क में आई, it saw and it distributed it to one of the load balancers. For example, this one. Again, इसमें भी algorithm होगा कि कौन से इसमें भेजना है. ठीक है? So it went to what? Load balancer 2. And फिर वहां से मुझे it went, that is why you see the IP address of 1404.137.18.137.64. वहां से रिक्वेस्ट गई अंदर उनके सर्वर पे and it came back. ठीक है? नेक्स्ट टाइम नॉट नेसेसरीली आपको ये आएगी, डिपेंड्स आप कहाँ हो और कहाँ से ये कर रहे हो. सो इट कुड बी दैट whatever all the what do you say, all requests from coming from India should go here. ठीक है? It's a .com, so everybody uses this. All coming from America should go here. ठीक है? And something like other countries over here. That is why when मेरी request आई, it reached their network. It went to the Indian load balancer that is handling requests from India. It goes to the server that is behind it, and that server gives me the information, which is this over here in our code. ठीक है? अब if you want to verify, we can do it other way around also. ठीक है? You pick the IP and hopefully this works. Otherwise it will go to another .147.67. Okay, so it's going to the Cloudflare network, as in it is going to the load balancer. ठीक है? Server पे नहीं जा रहा है, that is why I cannot access. Okay, I'll have to do .com directly. I cannot go through the IP address. I have to go through the name that is given to it, because that's the record in the DNS server. ठीक है? तो another reason why I cannot go is because ये private होगा. ठीक है? Private within this infrastructure. Okay, within this infrastructure is private. ठीक है? Which I cannot access. That is why I have to type chess.com. ठीक है? तो वो जाएगा किसी सर्वर पे जो यहाँ पे है. Okay, and that server will send the request inside. ठीक है? So I only get the name of the load balancer and not the server behind it. Next, same way you can do for protocols. TCP is already there. Okay, copy paste. It will give you a number. Protocol is 6. The reason it gives you a number is because every protocol has a number associated with it. So for example, TCP is 6, UDP is 17, ICMP is 1. So when you put this in your program will go to the internet and find protocol number 6. So instead of TCP, it will look for 6, or 6 का जो भी information है, it will give it to you. So for example, अगर आपके program ने ढूंढ लिया कि TCP 6 है, okay, and it goes to
here TCP6. Okay, so it can take information from the RFCs that are there on the internet. RFC TCP. This RFCs. RFCs are international documents of agreed upon protocols. This is it's like a fact check book कि हमें इस हिसाब से ही सब डिजाइन करना है etc etc. So your program will look for this after you have obtained information about your protocol. ठीक है? So it doesn't look for TCP, it looks for the number, unique number that is associated with your protocol. ठीक है? Next. So unfortunately, the socket module in Python does not provide a direct way to retrieve detailed information beyond the protocol number. However, you can use external sources or libraries to gather more information. For example, you can use Scapy library, which is a powerful Python library used for network packet manipulation and analysis. तो कैसा करना पड़ेगा? First, I use socket library. उसमें से मैं TCP का 6 नंबर निकालता हूँ. वो नंबर मैं Scapy लाइब्रेरी को देता हूँ ताकि मेरे को और इंफॉर्मेशन मिल सके TCP के बारे में. ठीक है? क्या इंफॉर्मेशन वेयर आई कैन मैनिपुलेट द नेटवर्क और आई विल यूज इट फॉर एनालिसिस. एनालिसिस में क्या है कि हेडर कौन सा यूज हुआ है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, उसका मैक एड्रेस, उस पैकेट में क्या है वगैरह. पैकेट में क्या है इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बट यू गेट द आइडिया कि हाउ दिस वर्क्स. अगेन, अगर आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है मैन्युअली तो यू वर्क थ्रू GUI, लेकिन अगर आपका कोई प्रोग्राम है लाइक फॉर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन वर्क्स थ्रू प्रोग्राम्स. ऑटोमेशन के लिए तुम क्या करोगे? तुम कैसे हर बार तो जाके 6 नंबर नहीं निकाल सकते या टाइप नहीं कर सकते, राइट? यू कैन नॉट गो एंड टाइप 6 एवरी टाइम. सो यू हैव दिस प्रोग्राम that will get you the number. That number you put it in the library functions and then you work. So these codes about obtaining information about something can be used in automation or are used in automation. So these functionalities are very important when you are designing an application or you are working in automation. Okay? As an administrator or analyst, you don't have to go through them. You can work through GUI, but sometimes there are some systems that you have to use through command line. ठीक है? जिनके पास GUI नहीं होता, command line के थ्रू जाना पड़ता है. For example, कोई अगर switch हुआ या hub हुआ या फिर firewall हुआ, ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि हर बार तुम्हें GUI मिलेगा, कभी कभी कमांड लाइन मिल जाता है. अगर कमांड लाइन मिल गया तो तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा बिकॉज दीज आर नॉट द थिंग्स दैट यू कैन टाइप इट आउट इन द GUI, एज इन कि मैंने 80 नंबर डाला तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ गई एंड सो ऑन. ओके, दिस इज फॉर प्रोटोकॉल. ठीक है? 8080 क्या है? HTTP है. एनीथिंग एल्स? फॉर एग्जांपल if I put so what I can put 22. ठीक है? So it will give you SSH. I am putting numbers that I know. अगर कोई ऐसी सर्विस है जो मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा? I will run this code, I will put the port number और मुझे पता चल जाएगा कि what kind of protocol is network service is running on it, right? Okay, so right now this does not work अगर मैं कोई ये वाला नंबर डालूं, for example 4345. ठीक है? Now this is a custom port. ठीक है? 1024 या 25 के बाद पोर्ट्स क्या हो जाते हैं? कस्टम हो जाते हैं. दे आर नॉट स्टैंडर्ड एनीमोर. तो इस पे सर्विस आएगा क्या? नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नथिंग रनिंग. होपफुली अगर कुछ रनिंग हो तो पता चल जाएगा. सॉरी, port proto not found. Why? Because there is nothing running on that port. ठीक है? Again, how it is useful, for example, इसमें what do you say? Now I use port 80
22 because I already know them. ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता और तुम्हें जानना है कि 4345 पे कुछ चल रहा है कि नहीं, what you do, you run that code and it will tell you. मेरे केस में नहीं चल रहा था, लेकिन मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, और उसने सेटअप किया है, आप हो, ओके, एंड आपका कस्टमर नाइकी है, आप उसको शू लेसेस सप्लाई करते हो, ओके, और ये जो सप्लाई कनेक्शन है, ठीक है, यू आर हियर एंड नाइकी इज हियर, यू हैव अ कनेक्शन बिटवीन एंड यू टॉक अबाउट शू लेसेस, ठीक है, आपका कनेक्शन, आपका एक कनेक्शन है, एंड इन दिस कनेक्शन यू टॉक की कौन से शू लेसेस चाहिए, क्या चाहिए, मटेरियल वगैरह सब कुछ, और ये जो सर्विस है आप रन कर रहे हो, जहां पे नाइकी आपसे खरीदता है, आपने एक ई कॉमर्स साइट बना के रखी है जहां पे नाइकी आता है और आपसे शू लेसेस खरीदता है, राइट? तो ये जो साइट चल रही है कहाँ पे चल रही है? 4345 पे चल रही है. तो व्हेन यू एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और समवन हु इज एन एनालिस्ट, और कि आपको चलो कुछ ट्रबल शूट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो आप क्या करोगे? आप ये कोड रन करोगे, obtaining information about network services. क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है ना, और आपको जानना है कि क्या चल रहा है. तो उस पे क्या आएगा फिर? यहाँ पे प्रोटोकॉल आएगा, क्या चल रहा है? HTTPS चल रहा है, और या फिर डेटाबेस वाले प्रोटोकॉल चल रहे हैं, ओरेकल के चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप एक तो वेबसाइट रन कर रहे हो जो कि HTTPS है, और आपका डेटाबेस भी वहां पे है, इसीलिए ओरेकल है. तो जब आप 4345 ये पोर्ट का क्या कहते हैं कोड रन करोगे, तो इंफॉर्मेशन क्या आएगा? दैट देयर इज अ सर्विस रनिंग ऑन दिस पोर्ट व्हिच इज HTTPS एंड ओरेकल का डेटाबेस, या फिर व्हाटएवर. एंड व्हाई 435? बिकॉज इट इज अ कस्टम पोर्ट. कस्टम पोर्ट्स कब यूज होते हैं? जब आप अपने हिसाब से कोई कनेक्शन बनाना चाहते हो. I cannot use HTTP because it is standard for all over the world. I cannot use SSH 22 port 22 because it is standard all over the world. वो custom port नहीं है. Custom क्यों? क्योंकि it's a connection between me and Nike ना, ये तो custom हुआ, ये थोड़ी ना worldwide use होता है, right? That is why anything beyond 1024 या कुछ becomes custom, और उसका अलग से connect protocols run honge, services you'll see. Otherwise, in order to understand how the code works or what information to obtain, use the ones that are already there, already you know. 445 पे क्या चलता है पता है तुम लोग को? Microsoft DS. Do you know what is Microsoft DS? No, sir. Microsoft, ठीक है, उसमें SMB चलता है, ठीक है, SMB सर्विसेज चलती हैं, SMB पोर्ट, ठीक है. सर्वर मैसेज ब्लॉक, सर्वर के मैसेजेस इट क्या कहते हैं, होल्ड्स और वर्क्स, और उसको ये करने के लिए. सो जब आप कोई नेटवर्क ड्राइव वगैरह ये सब करते हो ना चेंजेस, तो SMB यूज करता है. SMB is a communication used to share files, printers, serial ports, etc. ठीक है. सो नेटवर्क, जो मैं कह रहा था, नेटवर्क शेयर ड्राइव में जब आप ये करते हो, अभी तो ये था, ठीक है, GUI इमेज तो नहीं दिख रहा, बट बेसिकली जब आप यहाँ पे व्हाट इज इट, नेटवर्क ड्राइव्स में यहाँ पे समथिंग व्हेन यू ऐड और यू डिलीट और यू रिमूव, उस टाइम पे ये प्रोटोकॉल यूज होता है व्हिच हेल्प्स यू टू मैप समथिंग एंड ऑल, द ड्राइव्स एंड द फाइल्स, शेयर इट, ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग. Okay, so I hope you understood the uses of these small functions, okay, where you can use them, why they are used. Okay, they are mostly used by applications developers
if they want something related to network. Generally, like I right now haven't used it, क्योंकि अगर मैं एक admin analyst हूँ तो I would go through the GUI third party tools, but since I know और कुछ machines पे अगर नहीं हुआ तो I can use these codes. ठीक है? Why they are important? You can do a simple Google search and find out why they are important. I'm just showing you how you can get that information. Okay. Yeah. Any doubts? सर Yeah. हाँ सर, जो लोड बैलेंसर्स है Mm-hmm. तो वो मतलब ऐसा जब वर्क करते हैं तो मतलब उनका ऐसा सेम नेटवर्क में होना मतलब कंपलसरी है क्या, या फिर वो डिफरेंट नेटवर्क्स में भी हो सकते हैं? नहीं, जनरली सेम नेटवर्क में ही रखते हैं, बिकॉज अगर नेटवर्क चेंज हुआ तो अलग से कॉन्फ़िगरेशन लगेगा. तो व्हाट आई मीन इज, एक सेकेंड. ओके, हम राउटर्स यूज करते हैं दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, करेक्ट? तो अभी अगर तुम्हारा लोड बैलेंसर यहाँ पे हुआ इस नेटवर्क में, उसको मैनेज क्या करना है, यहाँ के सर्वर्स. ठीक है, तो अब इसको, इसका कोडिंग करो, इसके कॉन्फ़िगरेशन करो, चेंजेस करो, फिर यहाँ पे भी करो. अगर एक का भी हुआ तो भी सेम ही सिचुएशन है. ठीक है, यू हैव एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस एंड कोडिंग ऑफ द थिंग्स इन बिटवीन. ये तो सिचुएशन पॉसिबल है, बट हम नहीं करते बिकॉज वी डोंट वांट दिस एक्स्ट्रा थिंग. ठीक है, फिर ऊपर से अलग चीजें भी करनी पड़ेंगी, बिकॉज तुम्हारा लोड बैलेंसर डायरेक्टली सर्वर्स को कनेक्टेड नहीं है, इट इज कनेक्टेड थ्रू दिस राउटर. ठीक है, यहाँ पे और फिर अगर स्विच आया बीच में, ठीक है, स्विच हम कब यूज करते हैं, जब विद इन द नेटवर्क कनेक्ट करना हो. हमारे कंप्यूटर जब एक ही नेटवर्क में है और अगर इन लोगों को अपने आप में बात करनी होगी तो वी यूज अ स्विच, राइट? सेम वे सर्वर्स का अगर मैंने किया तो अब इसका देखो, इसका देखो, इस स्विच का देखो, सब देखो. सो ऑलमोस्ट नेवर, बट एक ही नेटवर्क में लोड बैलेंसर होगा, उसके पीछे सर्वर्स होंगे, या अगर पीसी, कोई अगर पीसी यूज कर रहा होगा तो पीसी, व्हाटएवर, वो जो भी मशीन्स हैं वो सारे एक ही नेटवर्क में लोड बैलेंसर के पीछे होंगे. ओके सर. सर तो मतलब सपोज ऐसे कोई मतलब नेटवर्क अटैक्स वगैरह करता है तो फिर उसके लिए तो फिर वो सेम नेटवर्क में रहे तो फिर थोड़ा सा ये होगा ना मतलब. हाँ, तो उस केसेस में कैसा है कि जैसे मैंने कहा अभी, ये वाला जो एग्जांपल था, किधर गया ये, ठीक है, इसमें कैसा है, अभी ये जो हमारे 4 लोड बैलेंसर्स है ना, नॉट नेसेसरीली कि मैंने सम इसमें रखा है. अब हम फॉर एग्जांपल जब मैं ट्राई कर रहा था 143 जाना, 104 वगैरह जो टाइप किया ना मैंने, वो जाने दे रहा था क्या? नहीं, बिकॉज देयर इज समथिंग ब्लॉकिंग मी. तो मुझे chess.com से ही जाना पड़ेगा. अगर आईपी नहीं है तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सा सर्वर है, कौन सा लोड बैलेंसर है. अब जो आ रहा है वो पब्लिक आईपी था, ठीक है, तो वो इसी लोड बैलेंसर का हो सकता है या फिर इसके पहले भी और कुछ हो सकता है. अब मुझे वो नहीं पता. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, कहाँ गया वो, देखो अब तो फॉरबिडन नहीं आ रहा है. ठीक है, इसका चला गया शायद. एनीवे, सो द थिंग इज कि आई एम गेटिंग अ सर्विस फ्रॉम दैट आईपी, बट जब मैं उसके रिवर्स जाता हूँ आई डोंट गेट इट. ठीक है, अगेन फर्स्ट बिकॉज इट इज नॉट अलाउड नेटवर्क से, कि बाहर से अगर कोई कनेक्शन आ रहा है तो डोंट अलाउ. ऑन टॉप ऑफ दैट, नाउ आई डोंट नो कि वो
कौन सा सर्वर है, वो राउटर है, सर्वर है कि क्या है that IP. Okay, it's just that I am getting that service and it is a public IP. तो किसका है, कहाँ है, ये नहीं पता. So these are the security things ये. And अगर हैक भी कर लिया तो this is separated. ठीक है, this are all separated. Like तो अमेरिका का लोड बैलेंसर अलग, उसके सर्वर्स अलग. They are kept in different subnets. याद है, this is in different subnet. ठीक है, फिर एक दूसरा सबनेट होगा, इसमें इंडिया होगा, इंडिया के लोड बैलेंसर्स होंगे और इंडिया का सर्वर्स होंगे, सर्वर्स लोड बैलेंसर्स. तो अगर कोई फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहले इस नेटवर्क में आना ही इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अगर वो नेटवर्क में आता है तो देयर आर डिफरेंट सबनेट्स, सो ही विल बी एबल टू मे बी हैक समथिंग ओनली दिस वन थिंग. ओके, क्योंकि इसके बाद भी लोड बैलेंसर के बाद भी देयर इज सिक्योरिटी पुट इन प्लेस सर्वर्स तक पहुंचने के लिए. ठीक है, दीज सर्वर्स आर अगेन पुट इन ये सिक्योरिटी ग्रुप्स. तो ये तुम्हारा सर्वर, उसके बाहर तुम्हारा सिक्योरिटी ग्रुप, उसके बाहर लोड बैलेंसर. लोड बैलेंसर को भी एक अलग सिक्योरिटी ग्रुप में रखते हैं, उसके अलग सिक्योरिटी रूल्स, फायरवॉल्स. ठीक है, इसको अलग से एक सबनेट में रखेंगे, उस सबनेट को नेटवर्क में होगा, वो नेटवर्क किसी लाइक इट विल बी चेंज्ड, प्राइवेट टू पब्लिक वाला सीन होगा. एंड मुझे फाइनली क्या दिखता है, सिर्फ ये आउटर लेयर दिखता है. आई एम जस्ट हियर, जिसमें वो 1403 आया, वो भी मुझे रिवर्स पिंगेबल नहीं था. ओके, सो इट इज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट इफ समवन डज इट, वो सर्वर तक तो नहीं पहुंचेगा, किसी सबनेट तक मैक्सिमम पहुंच जाएगा. सो एवरीथिंग इज सेपरेटेड एंड एवरीबॉडी हैज इट्स ओन सिक्योरिटी थिंग. Okay, so to answer your question, if somebody reaches to the load balancer, only a part of it will be क्या कहते हैं, hacked. ये 4 लोड बैलेंसर्स है, उसमें से सिर्फ एक होगा, वो भी लोड बैलेंसर तक ही रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा. और लोड बैलेंसर पे कोई ये नहीं होता, फंक्शनैलिटी, डेटाबेस, कोड बेस नहीं होता. उसका काम है सिर्फ जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको भेजना यहाँ वहां. तो अगर हैक कर भी लिया तो उसे कुछ मिलने नहीं वाला है. ठीक है, क्योंकि उसे एक्चुअल प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए सर्वर तक पहुंचना पड़ेगा. ओके सर. मेक सेंस? यस सर. समवॉट तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हुआ? यस सर. ओके, दैट्स गुड. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 5 बचा है. सो देयर आर 2 सिनेरियोस लाइक आई सेड, जो मैं दिखाऊंगा. आज एक दिखाऊंगा, कल एक दिखाऊंगा. ठीक है, टुडे इज द लाइक व्हाट आई से सिंपलर वर्जन. ठीक है, कल हम मैनुअल के थ्रू वाला चेक करेंगे. ओके, सो our experiment 5 is going to be natting. ठीक है, natting demonstration. We have 2 PCs, switch, router 1 and another PC. Okay, these are in different networks, as you can see with the help of routers. There are 2 routers. So this is one connection over here. I am moving my mouse arrow, and this is one connection over one network over here. So एक network में 2 PCs है, दूसरे में एक है. ठीक है, so let's see how natting works. natting में क्या होता है, private is converted to public and the communication goes on between 2 public IPs. ठीक है, so how my sorry whiteboard. अभी जैसे हो रहा था, जो एग्जाम्पल था, सेम दैट वे. सो what we are gonna have is, we are gonna have one PC with the private IP address, switch, router. यहाँ पे हमें मिलेगा public IP address and then to the other public IP address
and to the private IP address. ठीक है? So connection comes between public to public. This guy doesn't know about this private, and this router does, or this network basically. This network doesn't know about this private, and this network doesn't know about this private IP. Okay, that is the whole point of this NATing. Why we do NATing? So that our private IP addresses are not exposed out to the internet. So जब आप देखोगे बाहर connection किसके बीच हो रहा है, it is happening between public IP and public IP. ठीक है, सिर्फ यहाँ तक आपको दिखेगा, अंदर वाला नहीं दिखेगा. अंदर वाला communication is all different and handled by router over here. So this is router 1, this is router 2. Okay, when I say two scenarios, one is where I will directly assign public IPs from the GUI, and dusra is via the CLI, where there are certain commands of NATing. ठीक है, so आज GUI वाला करते हैं, कल CLI वाला करेंगे. ठीक है, PC, switch, routers and PC. Let's try. सर Yes. हाँ सर, जो मतलब राउटर 1 से PC 2 को है वो मतलब वो स्ट्रेट थ्रू होना चाहिए ना, वो क्रॉस ओवर केबल है. राउटर 1 से PC 2 को. हाँ, सर वो नहीं, वो मतलब वो प्रैक्टिकल में वो मतलब पैकेट ट्रेसर पे. एक सेकेंड. हाँ, ये सर जो राउटर 1 है और PC 2 है तो उसमें हाँ. स्ट्रेट थ्रू होना चाहिए ना. हाँ, ये तो दिस इज ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड. आई जस्ट यूज दिस ऑटोमेटिक कनेक्शन. आप चाहते हो तो यू कैन यूज व्हाटएवर. This copper crossover has been used. You can use whatever you can't use straight through. I just use a automatic connection and it worked. So sorry, not open new. Okay, let's try. So I go in network devices. ठीक है, उसमें दो routers. Let's use these PT routers. ठीक है, routers, different routers have different functionalities. These worked for this experiment, so I'm taking these. These are, you can consider them as general purpose. ठीक है, other general purpose or widely used is 1941. ठीक है, I think a more modern one is 4331. 2911 is also a good router. ठीक है, so different scenarios will need different routers. उनकी अलग functionality होती है. In general ये वाले वर्क कर जाते हैं. ठीक है, end devices, एक PC, दो PC, and sorry, and a third PC. Then we need a switch for the communication between the PCs. So network devices, switches, again PT switch you can take, kind of general. ठीक है, wait, I'll just इसको थोड़ा ऊपर. ठीक है, let's make the connections. I am taking the automatically chosen connection type. If you are well versed, okay, with different cables, use specific ones accordingly. ठीक है, तुम्हारी मर्जी जैसे तुमको चाहिए. So he has routers के लिए serial ही आता है. It's just that कि वो automatically chosen. I didn't
choose it. ठीक है? Now let's put some notes. ठीक है? I want to give this 192.168.0.1. I want to give this 192.168.0.2. ठीक है? 192.168.0.3. This I will give 10.10.10.2. I'll give this as 10.10.10.1. ठीक है? These are nodes, but I will configure them. These are statically configured. तो इस PC का IP address, this is this PC's IP address. अब ये एक नेटवर्क के अंदर है, right? So इस इंटरफेस का IP is similar to the one in the net. तो ये वाला इंटरफेस जो लेफ्ट साइड में है, it should be in the same network. सेम नेटवर्क में होना चाहिए, इसीलिए इसका IP एड्रेस है 192.168.0.3. सेम वे यहाँ पे सेम लॉजिक. So I have IP this, and then I have IP for the right hand side interface. Okay, and now I will have public IPs over here. Okay, so let's pick something like 200.18.0.1 and here 200.18.0.2. ठीक है? Not necessarily कि सारे IP addresses work करेंगे, but these will. Otherwise Google से just pick basic testing के लिए जो भी public IPs use होती हैं and they should work. ठीक है? कभी कभी error आ जाता है, but generally they do work. ठीक है? So in बीच वाला जो portion है उसके interface के लिए we have public IPs. Okay, let's get back to the scenario we had. ठीक है? So we have our PCs over here. They are connected via switch. Switch is connected to the router. This is connected to router, and then we have another PC. We don't have a switch here because there is only one PC. We don't need it. So we have private IP over here, private IP, and private IP over here because this is one network. Sorry, this is one network. Okay, same we have network 2, and we have private IP address associated with it. यहाँ पे it starts with 192.168.0. Here it starts with 10.10.10.10. And then for the communication between two networks, we have public IP addresses. These are 200 something and these are 200 something. So this, ये जो अंदर वाला है, this is interface. Okay, whatever you want to call it, interface 1, interface inside, whatever. और ये जो बाहर का है यहाँ पे, ठीक है, ये this one is another interface. Same for here. इसका अपना बाहर का अलग इंटरफेस जिसका अपना खुद का IP एड्रेस है, और यहाँ पे इनसाइड वाला अलग इंटरफेस. इंटरफेस इज नथिंग बट अ फेस ऑफ समथिंग, ठीक है, और अ साइड ऑफ समथिंग. तो स्क्वायर हुआ तो कैसे, ये एक इंटरफेस नॉर्थ, इंटरफेस ईस्ट, इंटरफेस साउथ, इंटरफेस वेस्ट. सेम वे, ठीक है, इसका एक इंटरफेस अंदर का, एक इंटरफेस बाहर का ऑफ ऑल द राउटर्स. Okay, so let's set up their IPs. You go into desktop, you go in IP configuration and you type 192.168.0.1. Click anywhere else, subnet mask is directly calculated. Default gateway, it is our router because all information is coming in and going out via router. तो हमारा गेट क्या हुआ, हमारा गेट हुआ राउटर. गेट इज नथिंग बट जैसे घर का गेट होता है जिसमें से सब
इंसान अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, वैसे ही एक नेटवर्क का सब इंफॉर्मेशन अंदर बाहर एक गेटवे से करता है। इस हमारा क्या है, ये राउटर है। सो 192.168.0.3 क्लिक एनीवेयर, इनवैलिड गेटवे एड्रेस एंटर्ड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो बाद में डालते हैं। ठीक है, 192.168.0.2 इस पीसी का कर देते हैं 10.10.10.2 डन। ओके, नाउ इंटरफेसेस। ठीक है, इसका देखो, इस अगर तुम इस रेड एरो पे क्लिक करोगे यू विल सी FA0,0, ओके, which is nothing but this fast ethernet 0,0. So let's put it here 192.168.0.3. Subnet mask automatically calculated and you switch it on. अब वो रेड का ग्रीन हो गया देखो, ठीक है, स्विच इट ऑफ। अब हम फिर से गेटवे डालते हैं हमारा, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कॉल आ रहा है। ओके, वेयर वर वी, सॉरी, ठीक है, तो अब गेटवे देना है हमको। लेट्स ट्राई अगेन 192.168.0.3। सी इट वर्क्स, क्योंकि अब हमने इसको आईपी एड्रेस सेट किया है एंड कनेक्शन ऑन किया है, विच टर्न्ड आउट टू बी इंडिकेटेड बाय ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे रेड है, सो इट इज नॉट ऑन। लेट्स असाइन दिस आईपी एड्रेस एंड स्विच इट ऑन। ठीक है, सेम यहाँ पे देख रहे हो 0,0 है। अगर तुम एरो राउटर पे लाके रखोगे तो तुमको यहाँ पे दिखेगा बॉक्स में। ठीक है, दिस फास्ट इथरनेट सब 0 है, नॉट सेट है। लेट्स क्लिक, गो टू कॉन्फ़िग 0,0 10.10.10.1, click anywhere else and switch it on। ठीक है, अब ऑन हुआ है तो हमारा गेटवे सेटअप करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जानी चाहिए। 1, click anywhere and you are done। अब ये अंदर वाले, ये जो लाल वाला है, इसको सेटअप करना बाकी है। इफ यू सी वी हैव अ रेड एरो which means it is down, which means the router between connection is not set up or not working। अभी अगर मैं ये रेड एरो पे हवर करूं तो I see SE2,0। SE stands for serial, so serial 2,0 पे I click and I put the IP address, okay, so that's 200.18.0.1। click anywhere else and switch it on। you do the same for over here। okay, ठीक है, 200.18.0.2, switch it on, and as you see they both are green। hopefully I 0.1, yes, ठीक है। let's see if the connection between this and this works successful। so इतना तो कनेक्शन सही से हुआ है। नेक्स्ट कनेक्शन, दिस टू दिस सक्सेसफुल, ठीक है, तो ये वाला भी सेट है। दिस टू दिस failed and it will work again, it will fail। why did it fail? राउटिंग सेट नहीं है। great, correct। so we haven't set out routing। so basically scene is ये राउटर को, this guy over here, this router doesn't know about this or this entire thing basically, and he will not know about the private thing, लेकिन उसको public भी नहीं पता है kind of, ठीक है, कि उसके पीछे क्या है, कौन आने वाला है। and same thing for this guy doesn't know
कि ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे 10 वाला, और वो कनेक्टेड है, सॉरी, और वो कनेक्टेड है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू टेल देम कि कौन क्या कहा है, ठीक है। वी नीड टू टेल राउटर 0 कि ये जो PC2 है वो राउटर 1 को कनेक्टेड है और तुम्हारे राइट साइड में है, एंड वी नीड टू टेल राउटर 1 कि ये जो दो PCs हैं वो राउटर 0 को कनेक्टेड है जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो वी नीड टू पुट इन routing information. Okay, so you go to CLI again. ये हम सिर्फ routes डाल रहे हैं, ठीक है। दूसरे मेथड में we will also be putting some netting commands apart from directly setting it here, ठीक है। तो right now for example ये हुआ, okay, I am already in configuration mode. If you see config if, अगर तुमको देखना है कैसे जाते हैं तो ठीक है, ये मैं पूरा बाहर आ गया, completely out, ठीक है। Now I want to go in configuration mode. So the first command is enable. The next command is config, as in configuration का CONF, and T as in from terminal. So configuration from terminal. Now that I'm here, let's put the route. पहले इसका डालते हैं, एक ही का डालेंगे to show you how it works. If I want to show you another thing, wait, I'll show you, ठीक है। So let's try ping 200.18.0.2 first. ठीक है, let's try again. Ping 218.0.2. Okay, ठीक है, doesn't work. Now let's put the commands. Hopefully this is the right one. Sorry, IP route, ठीक है। So the command is technically like this, कि it is IP route to and from, ठीक है। So IP route is the command, कहाँ जाना है और कहाँ से जाना है। You want to reach Mumbai from where? From express highway, ठीक है। So I want to reach this IP from this router. So I want to reach, sorry, I want to reach what? This one, 10.10.10.2, 10.10.10.2. Subnet mask is 255. क्या है इसका subnet mask? Sorry. Okay. .0.0.0 via 218.0.2. 200.18.0.2. Inconsistent address and mask. No, it won't work here.
It is correct. Okay, let's try. Let's try the interface. Hmm. 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 I guess, sir, we have to go to the config if, and then we can put the command. But I am in config. और किसमें जाऊंगा? See, enable config. Sir, I guess, If I we say, have to go to the interface, specific interface. see config terminal से भी I am there only. Enter configuration commands, one per line. Okay, let's say sorry, on it. Configure. Sorry, I'm already here. Exit. Configure. See, configure from terminal memory or network. So I want to do from terminal. And I come here. ठीक है, एक सेकंड में चेक करता हूँ. Okay. Let's try. Let's change the interface 10.10.10.1. Mhm. Okay. Let's change the subnet mask to 55255. Oh, it worked. Okay, but my address is different.
That's weird. ठीक है. We'll see tomorrow. I'll see what is happening. Routes add नहीं हो रहे, but yeah. So if the routes get to know about each other, ठीक है, this will be able to ping the IP address, and this guy will be able to ping the public IP address, and the inside part won't be visible. ठीक है. Let's meet tomorrow. I'll see what is wrong, where the problem lies. Maybe in the public IP address that I said, but let's see. ठीक है. That's it for today. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you, sir.